guys, welcome to my channel. It's Arpan. If you are new to my channel, then please subscribe it first. And without wasting any time, let's move to our video. And today I am doing pencil color drawing, and for that I am using Dom's pencil color, and it costs only 100 rupees. And now I am using here a sheet, and इसके ऊपर मैं पहले I am making a rough sketch. And आफ्टर कंप्लीटिंग द स्केच नाउ आई हैव स्टार्टेड कलरिंग. एंड पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट शेड येलो कलर, एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ रेड कलर. आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ येलो एंड रेड कलर के. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वेरी इजी है, कोई भी बना सकता है. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये बनाने में. एंड सारे पेटल्स मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कंप्लीट करूँगी. सारे फ्लावर्स बीच में येलो कलर्स को फिल करके. तो और मैं बीच में पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ. एंड आफ्टर दैट इसकी आउटलाइनिंग एंड डिटेलिंग के लिए मैंने लेवेंडर यूज़ किया है, क्योंकि वो डार्क है. थीम कलर्स हमने पेटल का पिंक है, और डार्क थीम के लिए मैंने लेवेंडर यूज़ किया है. एंड बीच बीच में शेडिंग के लिए मैं रेड भी यूज़ कर रही हूँ. ब्राउन कलर भी थोड़ा सा यूज़ किया है मैंने. तो सभी पेटल्स को वन बाय वन मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी. सेम स्टेप्स को फॉलो करके मैं सारे फ्लावर्स ऐसे ही कंप्लीट करती जाऊँगी. एंड बहुत ही इजी है. शेडिंग करना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसके लिए हमें पेंसिल की टेक्निक आनी चाहिए कि हम कैसे पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं. तो अदरवाइज़ शेडिंग पेंसिल का कलर यूज़ करने बहुत ही इजी है.
completing all the flowers, and now I am doing colors on the buds of the flowers. And after doing that, now I am going to color the leaves. And firstly I will outline them with yellow color, and after that I will use green, parrot and other colors. I am using white color ताकि एक बेस बहुत ही सॉफ्ट सा मिले नीचे, ताकि कलर्स बहुत ही स्मूथली हो एंड बहुत ही अच्छा इफेक्ट आए कलर्स का. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग हेयर वाइट कलर. And you can use, it's totally depend upon you, either you want to use white color. तो इसलिए मैं ऊपर डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट एंड कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड सभी पत्तों को मैं वन बाय वन ऐसे ही कंप्लीट करती जाऊँगी. एंड बहुत ही सुंदर लग रहे हैं एंड बहुत ही नाउ इट्स अ लास्ट स्टेप जिसका कि बहुत ही इंतज़ार था आपको और मुझे भी कि मैं कलर करना बैकग्राउंड को. एंड उसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू कलर एंड आल्सो गिविंग लाइटर शेड्स विद लाइट ब्लू कलर, ताकि हम एक अच्छा थीम बना सकें. एंड बिकॉज हमारे फ्लावर्स डार्क हैं तो हमें बैकग्राउंड थोड़ी सी लाइट कलर की रखनी पड़ेगी. इसके लिए मैं ब्लैक कलर को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी एंड डार्क ब्लू ही दूंगी. बीच बीच में छोटी छोटी डिटेलिंग दे रही हूँ ब्लू कलर की. तो इसी के साथ ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है. आई होप आपको ये मेरी ड्राइंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना कैसी लगी. एंड टिल देन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.